Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 8. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le sujet de ce soir, être complet et parfait. Le signal Avyak, pour que le Père Brahma devienne complet, il a utilisé tous ses trésors de manière utile jusqu'au dernier jour. Vous avez vu la preuve pratique. Il est devenu un ange parfait. Alors, gardez l'objectif de devenir complet et parfait comme le Père. Quel que soit l'effort que vous devez faire, il est certain que vous devez devenir égaux au Père. Et voici maintenant Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. सफल करो तो सफलता मूर्त बनेंगे और सफलता बाबा ने कहा संपूर्ण बनना। Nous devenons une incarnation de succès lorsqu'on utilise nos trésors de façon utile. Et Baba dit, si on devient complet et parfait, nous allons révéler le Père. Donc, Baba dit aussi aujourd'hui que d'abord, nous devons d'abord devenir complets. Et une fois qu'on est 100% complet, après, nous devenons parfaits. Et aujourd'hui, je pensais à cela. Si on a $1 et après $100, ça veut dire que c'est complet. Ça veut dire que chaque dollar, on doit l'utiliser de façon juste. Combien y a-t-il de respirations dans une minute? On doit utiliser chaque respiration de façon juste, de façon utile, de chaque pensée de façon utile. C'est ce qui veut dire que nous deviendrons complets et parfaits. Parce que dans chaque bon souhait, sentiment pur, il y a des sentiments de bienveillance, tout cela et les pensées et les souffles aussi auront cela. Donc, le temps aussi est utilisé de façon utile. Le souffle, les pensées et le temps. Chaque moment devra être utilisé de façon utile. Chaque élément devra être utilisé de façon utile. Et c'est un aspect très profond du Maini. Et pour l'utiliser de façon utile, qu'est-ce qui se passera? S'il y a des situations devant nous ou qu'il y a les tâches de Baba ou la tâche de Baba, que ce soit personnel ou pour la tâche de Baba, les pensées doivent être, et chacune des pensées doit être soit dans le souvenir de Baba, soit être de servir par l'esprit. Le pouvoir est aussi accumulé. Plus nous augmentons notre niveau, plus tout ceci devient accumulé. Si je pense que moi, l'âme, je suis un être paisible,
Voilà, je suis un être paisible. On en devient l'incarnation. मैं ये चाहती हूँ कि हम सभी बहुत Et अच्छी तरह से on समझो utilise tout de कि façon सफल utile. रहना Je veux कैसे que है। chacun d'entre nous, nous comprenions qu'est-ce que ça veut विजय dire et आदि कर्म utiliser भी tout आता है, à bon escient. लेकिन शुरू संकल्प से होता है कि Bien बाबा ने कहा sûr, कि tout devient संकल्प une से action, un शक्ति का accomplissement, बंधो, mais on doit, शक्ति जमा tout होती है passe par les pensées. और शक्ति On धारण donne होती है on donne d'abord par la वाणी pensée के द्वारा। et ensuite on accomplit une action महावाक्य où on मनन चिंतन et le श्रवण Murli de Baba, les versions élevées de Baba, कर्म के द्वारा partager le गुण बनाना, baratage, les réflexions, et grâce aux actions, on हर donne संबंध les vertus. संपर्क में खुशी बांटो Et dans chacune des relations et और contacts, on वाणी के doit द्वारा distribuer le सत्पुरुषों bonheur. करो। Et, et à travers l'intellect, on utilise le तू temps सफल करना de façon utile. Donc, tout utiliser de façon utile. उसका सदुपयोग करना, En d'autres mots, वर्थवाइल, on doit toujours utiliser correctement, यथार्थ नहीं, justement ou यथार्थ précisément. मतलब व्यर्थ नहीं। Précis veut dire sans aucun कोई बात हो gaspillage. जाती है, हो गई, Si quelque chose se passe, bien ध्यान से sûr, c'est आया, arrivé. पर चलो आगे चलो, क्योंकि ऐसे ना हो कि काम तो Ensuite, मैंने cela किया vient à mon attention, उसके पीछे mais ensuite, on सफलता नहीं doit मिली। progresser. Mais on ne doit कोई बात pas gaspiller 5 minutes ou encore moins 15 minutes. तो किसी भी Si बात quelque का chose कारण s'est passé, c'est tout. On passe à autre स्टक chose. नहीं होना है। Et quand on n'a चाहे pas besoin बात de अच्छी हो s'arrêter, on n'a pas चाहे besoin de बात rester खराब coincé बात non हो, plus. दोनों होता है ना। Si quelque chose, कई बार on गलत est, काम में स्टक हो on peut जाते हैं, être coincé dans ऐसा quelque क्यों chose ou हुआ, quelque ऐसा chose peut être क्यों नहीं हो रहा, coincé en nous et se poser किस les बात में questions, स्टक pourquoi हो गए, ceci s'est-il कौन सी passé? बात में Pourquoi ce स्टक हो s'est-il गए, pas passé autrement? तो Nous क्या होता sommes है कि pris वो au piège. सफलता नहीं मिलती है Et alors, स्टक होने से। nous n'avons pas le succès और parce que आगे nous बढ़ते sommes हैं जितना, piégés. उतना फिर संपन्न बनते Et हैं। quand on avance, c'est ainsi que l'on अच्छी devient बात है कि ब्रह्मा complet. बाबा Donc, हमारे c'est très bien, dit Moïni, que Brahma Baba, que notre Brahma संपूर्ण Baba, बनने के लिए अपने हर pour खजाने devenir complet, il a एक एक utilisé स्थान tous तक ses trésors सफल किए। de manière utile jusqu'au dernier jour. ब्रह्मा बाप ने अपने संपूर्ण बनने के लिए Le Père Brahma, pour qu'il सबके devienne लिए complet, il a utilisé आदि tous से ses अंत trésors de तक manière utile सफल jusqu'au किए। dernier दिन jour. को कहेंगे, श्वास भी कहेंगे। बाबा Pourquoi ने संपूर्ण किया, disons-nous jour? On peut aussi dire समस्त बनना, souffle aussi. निकलकर Baba, चला, s'est abandonné, il a पता fait था कुछ भी नहीं करना créer है। un fond आज et हम Baba कई savait देखते हैं rien ne serait औरों gaspillé. का अलग On अलग le voit encore सफल aujourd'hui. करने का तरीका है, पर बाबा का तरीका जाता Tout le जाता monde, घड़ी तक tout le monde a des façons, chacun a des façons सफल différentes फल क्या है d'utiliser इसका, euh, de façon utile. ऐसे Mais ही Baba ब्रह्मांड a बना, tout fait jusqu'à la dernière minute, संपूर्ण jusqu'au dernier jour. फरिश्ता बन गया। Il est devenu un ange parfait. इसका मतलब Ça कि a été sa बिल्कुल pratique. Il est devenu un आत्मा ange हल्की हो parfait. जाए, Ça veut ऐसा dire, dit सफल होना Moïni, है। que les âmes doivent devenir कुछ ऐसा légères. करना होगा Il doit y और avoir फिर l'incarnation de la कि légèreté. विजय बाप समान Et ainsi, संपन्न और on संपूर्ण utilise बनना tout de चाहता है। façon utile. कुछ भी Comme le कारण Père, le but du Père, c'est de लेकिन devenir निश्चित है complet et parfait. कि Gardez आप cet समान objectif, बनना quel que soit चाहते हैं। l'effort que vous devez faire. Il est certain लक्ष्य que होता vous है devez devenir तो égaux कर लेते हैं, au कर Père. पाते हैं। S'il y a un nom, on जब est भी en दिलों mesure में de le हमें faire. किसी बात की उलझन है Quand on voit dans notre esprit, या समाधान नहीं मिल s'il y a रहा de la है, confusion तो मैं तो et कहता qu'on हूँ ne peut pas trouver यहाँ la से solution, je dis tout le temps, जीरो बुद्धि टच se करो, rappeler de Baba d'abord et Baba va toucher कुछ भी l'intellect संभव हो जाए। et ensuite l'impossible devient और अगर नहीं possible. होता है उसमें भी कुछ कल्याण है,
Et si cela ne se passe तो pas, कल्याण को देखते हुए हानि même भी quand कभी cela ne कभी se passe pas, il y a कल्याण aussi को du बढ़ाने की bénéfice. Il y a toujours des हानि को solutions, हमेशा toujours डर du रहे, bénéfice dans ce que nous devons faire. Mais, चिंता हो तो अपनी mais समझदारी avoir de से la peur ou des inquiétudes tout le temps, और हमारा समय भी ça संपन्न dit हो de रहा nous है que notre niveau n'est और pas हम भी bon कंप्लीट नहीं हो रहे, et notre temps n'est अपने pas विश्वास को utilisé à बढ़ाने bon की escient, donc on n'est pas en train de devenir complet. Alors, on doit avoir cette इसमें कहा कि confiance dans le soi, dans l'âme, ये निश्चित है कि हमको बाप समान बनना ही है, et c'est garanti, dit तो Moïni, क्या que करें, l'on बात को doit छोड़ दें absolument devenir égaux au Père. Qu'est-ce que nous devons faire? या थोड़ा उपराम हो जाए बाबा की याद में, Devons-nous aller au-delà dans le तो souvenir कार्य du भी Père? संपन्न हो और हम भी संपूर्ण हो, Ainsi, क्योंकि la tâche संपूर्णता तो sera उनकी भी है complète et nous कार्य deviendrons भी है, aussi complets et parfaits. Parce que c'est बेशक दोनों का le, कनेक्शन है, le soi doit devenir लेकिन दोनों से complet et on doit aussi devenir parfait. तो Nous sommes हमारी des जिम्मेदारी instruments हो जाती है कार्य को संपन्न करना, et c'est और alors संपन्न la बनते ही responsabilité de chacun de compléter la जब हम tâche et कंप्लीट हो ensuite और nous जब कार्य devenons की complets. जिम्मेदारी बाबा ने हमें Donc, दी nous है devons हम être भी वो complets कंप्लीट करें, et la tâche qui est notre हमारे responsabilité, on सामने doit ऐसे aussi बहुत उदाहरण हैं achever cette tâche. पूर्वजों में, On a tellement d'exemples दादा devant दादी nous, दादा दादी, des sœurs aînées, जिन्होंने des अंतिम frères, श्वास तक dada, dadi, कार्य को संपन्न किया, ceux qui sont là encore, तो ऐसा et लक्ष्य même भी dans है ceux qui ne sont कि plus, बाप समान हो avec un जानेंगे, dernier souffle, lors de leur dernier souffle, इस ils ont समय पर complété la आके tâche. Alors, on va संपन्न हो devenir comme जानेंगे le Père et on और va utiliser संपूर्ण भी tout बनेंगे, à bon escient et on va devenir complet धीरे et on va धीरे devenir धीरे धीरे parfait. धीरे On se sent très bien de संपूर्ण continuer à y penser बन ही et जाएंगे, tout doucement, on le devient. शांति। Et on va devenir complet et parfait. Om Shanti. ओम शांति Om अव्यक्त संदेश Shanti. 1969 से C'est la révision du Murli à 1969 partir de 1969. Conversion avec le cœur de l'ange. Alors, c'est le Murli du 27 septembre 1971. अव्यक्त वाणी तारीख है 27 सितंबर 1971 La révélation de la vérité स्नेह की शक्ति avec le द्वारा pouvoir de साधना की l'amour. प्रत्यक्षता स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना Avec चाहिए l'amour, il devrait y जैसे avoir aussi शुरू la से force de servir. Tout comme au वह début, जोश il y भरे avait l'amour et aussi la निर्भीक puissance. थे Elles étaient परंतु intrépides et अपने au-delà du soutien आधार de से l'atmosphère. C'est pourquoi elles avaient पवित्र un zèle, संस्थान une force, un संस्था enthousiasme constant pour le अभी service. वायुमंडल व À l'heure वातावरण actuelle, कहाँ कहाँ en voyant रूपरेखा l'atmosphère et बदलती है l'environnement, vous changez इसलिए parfois de सफलता forme. कब C'est कैसे pourquoi le दिखती है succès est parfois une chose et parfois जबकि une कलयुग autre. अंत की आत्माएं अपनी Puisque सत्यता les âmes de la fin de सुनिश्चित l'âge de करने fer में montent sur scène pour निर्भय révéler leur रहकर vérité, स्टेज पर tout आती en हैं étant intrépides, तो sans peur, पुरुषोत्तम संगम pourquoi युग les से âmes de l'âge de श्रेष्ठ confluence les आत्माएं plus élevées अपने créent-elles des formes सत्य प्रस्तुत différentes et करने में changent selon वायुमंडल l'atmosphère प्रमाण pour रूप se कार्यक्रम révéler comme बनाती हैं celle-là? आप मास्टर रचयिता हो ना Qui est honnête? वह सभी Vous êtes les रचना maîtres नहीं créateurs, elles sont la रचना को création. मास्टर
Comment la création verrait-elle le maître créateur? Quand vous regardez tout cela, tout en vous étant stabilisé dans le niveau des maîtres créateurs, à quel genre de jeu tout cela ressemblera-t-il? Le jeu des poupées et celui des bagattes. Quel est ce jeu de ceux qui ont du faste et de la splendeur? Quelle scène voyez-vous? Quand il pleut, quelle scène voyez-vous après la pluie? Même dans un peu d'eau, les grenouilles pensent qu'elles sont dans un océan et continuent de coasser et de danser. Cependant, c'est en fait l'eau du bonheur temporaire. Vous verrez ainsi la scène des grenouilles qui coassent, qui dansent, sautent. Vous verrez qu'elles ont continué à éprouver beaucoup de bonheur temporaire. Ainsi, en vous stabilisant sur la scène du maître créateur, vous verrez une telle scène. Vous ne pourrez voir aucune essence. Les mots sembleront dénués de sens. Par conséquent, pour révéler le pouvoir de la vérité, vous aurez besoin de courage et d'enthousiasme. Maintenant qu'il reste encore un peu de temps, avez-vous l'enthousiasme de révéler la vérité? Est-il encore temps de révéler la vérité? Qu'il y ait l'ivresse et aussi de l'éclat, qu'il y ait une ivresse qu'ils éprouvent, que devant cette vérité, leur, leur feinte temporaire ne suffira pas. Tout comme lorsqu'on montre un drame sur scène, on montre comment les vices s'en vont. Ils croisent les mains, s'inclinent et prennent congé. Et de même, il faut maintenant montrer ce drame d'une manière pratique sur la scène mondiale. Maintenant, dépasser cette étape du drama et entrer sur la scène illimitée. C'est ce qu'on appelle le service. De telles âmes utiles deviennent les grains du chapelet et de la victoire, les perles du chapelet de la victoire. Vous devez devenir des âmes vraiment utiles. À l'heure actuelle, vous pratiquez toujours cela. Lorsque vous pratiquez cela, vous partez d'abord à la chasse aux petites proies, puis vous chassez les gros lions. Vous verrez la dernière partie pratique exactement telle qu'elle est dans un petit drama. Alors, seulement, il y aura des cris de victoire d'un côté et des cris de détresse de l'autre. Tous deux seront sur la même scène. Et c'est à continuer un peu plus tard. फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे यह छोटा ड्रामा। तब एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होंगी, दोनों एक ही स्टेज पर। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।